Hi guys, welcome to my channel. So in today's video we'll be exploring the beautiful city palace of Udaipur. फिर हम boating भी करेंगे in Lake Pichola, जहाँ से we'll get to see all the famous highlights in the entire Udaipur. We'll also be visiting the Jug Mandir through boating only, so it's going to be a really fun experience. So hit the subscribe button if you still haven't, and let's get started. So now we are entering the city palace of Udaipur, but one thing I would like to say before starting with this video is that आपको अंदर बहुत चलना पड़ता है. It will take you at least 2 to 3 hours of walking inside to see the entire palace. So अगर आपके फैमिली में कोई एल्डरली हो जो चल नहीं सकता है, ऐसे कुछ है, तो you can always opt for a wheelchair option and have to pay extra. The whole architecture of this palace is a fusion of the Mughal and the Rajasthani culture. So this was the palace of the main Raja of Rajasthan and Udaipur, who was Maharana Uday Singh, and you get a whole view of the entire city from here. और अगर आपको फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ भी करनी हो तो उसके भी अलग चार्जेस है. अदरवाइज़ दे कैन चार्ज यू फाइन फॉर इट. आई विल बी मेंशनिंग ऑल द चार्जेस ऑन द स्क्रीन, तो चेक दैट. सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक फ़ोटोग्राफी के लिए यू हैव टू पे, बिकॉज इट इज़ दिस प्लेस इज़ वर्थ एवरी पेनी ऑफ योर्स एंड एवरी कॉर्नर इज़ ब्यूटिफुल. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप फोटोग्राफी करे बिना रह नहीं पाओगे, बिकॉज देयर बी अ लॉट ऑफ अमेजिंग लोकेशंस फॉर यू टू टेक पिक्चर्स. सो इट्स टोटली वर्थ इट. एज यू कैन सी अराउंड everyone is just taking pictures because this place is absolutely gorgeous. So this beautiful city palace that you can see over here was built by Maharana Uday Singh, and it is located at the banks of Lake Pichola, and it took over 400 years to build this palace because it is very complex and very beautiful. As you can see, there are a lot of small shops also inside this palace for you to shop clothes, accessories and whatnot. Look at the intricacy of embroidery over here. You'll see all these traditional elephant and all motifs over there with traditional embroidery, Kashmiri embroidery, prints, block prints. ये मसाबा जैसे print नहीं लग रहा है? Masaba prints. Fashion.com. यहाँ शॉप लगाना इज अ वाइब, यही लगा लूँगा मैं. हाँ, ये है आपकी नेक्स्ट बर्डिंग डिज़ाइनर. इसका शॉप यहाँ पे जल्दी ही मिलेगा. और यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, फ्रॉम बेड शीट्स टू साड़ीज़, चनिया चोली, बेबी ड्रेसेस, एवरीथिंग. सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बांधनी टाई एंड डाई शॉप दैट वी विजिटेड. बट यहाँ पे द रेट्स आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ इनसाइड सिटी पैलेस. सो पिक समथिंग दैट यू डोंट गेट इन योर होम टाउन्स वेर एवर यू आर फ्रॉम, and go for what is their speciality. So totally your choice. Enjoy the shopping over here. This is a very beautiful view from one of the corridors, and you can see the entire city of Udaipur from here. Just enjoy this gorgeous view. I'm going to stop talking. Now the cage that you can see over there, वहाँ पे they used to keep all lions and tigers and all these animals. And for shopping, apart from clothing, there are a lot of other options. अगर आपको आपके फैमिली को या किसी को loved ones को गिफ्ट करना हो तो souvenir shops are a lot. Then there is this sun god which they worship. So I myself have it in my house. It's considered to be very auspicious. So just pick one if you go there. Then a lot of other handcrafted stuff, souvenirs, मतलब जो चाहे वो, you know, there are a lot of options, so you can definitely go shopping. Palace देख के हो गया है. Now we are going for boating. Now boating is my personal favorite part. As you can see, this is situated at the banks of Lake Pichola. तो हम उसी Lake Pichola में boating करेंगे, and you can see all the famous highlights in entire Udaipur in this boat ride. यहाँ पे you have another boating ticket as well, and so let's get started.
अगेन इफ़ यू आर अ बॉलीवुड बफ लाइक मी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे रामलीला और ऐसे सब मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, ये जवानी है दीवानी इंक्लूडेड. सो वी गोइंग टू बी कवरिंग ऑल द पॉइंट्स एज वेल. ये जवानी है दीवानी में ना इसमें वो बोलते हैं ना कि मेरे कुछ बच्चा मेरी अक्ल. So for that period of time, these people hired this place और फिर किसी को आने नहीं देते. से शूटिंग के टाइम पे ना उसी डक्स करते थे, ज़्यादा रखते ही नहीं होते थे. और वो जो उसका नहीं होता है रामलीला होता है जो डुबकी मारता है. हाँ 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 सर रणवीर सिंह. हाँ एक पूरा उसी रेस्टोरेंट आप लोगों ने सुन रखा है. हाँ लेक शोर. I want to come here. अभी चले यहाँ पे लंच कम राइट आने वाला है. See more monkeys. Yeah. ये है क्या? नहीं वो है. जहाँ पे हम चल रहे थे. ये वाली बोट क्या स्पीड बोट है क्या? ये वाली बड़ा ग्रुप होता है तो ये वाली. कहते हैं नंबर ऑफ डॉग्स यार, इतने सारे डॉग्स. Now what you can see over here is the famous Jug Mandir. And boat ride में क्या होता था कि once you reach till Jug Mandir, यहाँ पे you have a halt for 20 minutes. So you can spend time over here, have lunch या जो भी है, अगर वो आपका 20 minutes में होता है तो. And they will drop you back from the place you started in City Palace. Now Jug Mandir is built on Lake Pichola only. It is also called as Lake Garden Palace. Jug Mandir was started by Maharana Amar Singh, continued by Maharana Karan Singh, and finally completed by Maharana Jagat Singh, which is why it is named as Jagat Mandir. The royal family who used to stay in City Palace used to come over here as a summer resort or just a place for relaxing and for parties. Now a lot of occasions are held over here, especially marriages. It is very very expensive but it is beautiful. Coming every person. तो आप यहाँ पे नॉर्मल लंच करने के लिए भी आ सकते हो. As you can see the entire line over there was a buffet. And then from here they dropped us back to the City Palace. So this was it for today's video guys. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in my next video. Bye.